तो इस तो पहला पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल वालों अज दक्षिणी कोरिया के सब तो वड्डे डेयरी फार्म का दौरा भी किया गया। इस नाल ही उन्होंने मिल्क प्रोसैसिंग तकनीक का जायजा भी लिया। इस मौके डेयरी मैनेजमेंट वालों उप मुख्यमंत्री का निघा स्वागत होया। पंजाब विच निवेश लियाउण लई उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल वालों मीटिंगां का दौर शुरू हो चुके हैं। अंदाजे कि पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल वालों अज दक्षिणी कोरिया के सब तो वड्डे डेयरी फार्म का दौरा किया गया। इस नाल ही उन्होंने मिल्क प्रोसैसिंग तकनीक का जायजा लिया ते नाल ही डेयरी मैनेजमेंट वालों उप मुख्यमंत्री का इस मौके निघा स्वागत किया गया। तो अंदाजे कि पंजाब विच निवेश लियाउण लई उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल वालों मीटिंगां का दौर शुरू हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल वालों अज कोरिया के सब तो वड्डे डेयरी फार्म का दौरा किया गया और मैल डेयरी फार्म जिहड़ा इस दियां 7 ब्रांचेस होर कोरिया दे विच ने और इत्थों का नंबर 1 ब्रांड है, प्रोडक्ट है। वो किस तरीके नाल इन्हां दी प्रोसैसिंग हुंदी है, खास करके जिहड़े दुध दे उत्पादक ने उन्हां दे नाल इस बारे असी गलबात करने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट के लोग साडे नाल ने। हाय, व्हाट्स योर नेम? Hello, my name is Minji Hong. Could you brief about this whole processing? How do you process this milk products and what is the export information about this? Okay, this is our Pyeongtaek factory that you had visited and you had a line tour. This is one of our main factories in Korea. Mainly we do informed formulas and we also do special informed formulas for sick children. Okay. Okay. And then we also do white milk, yogurts and juice and ready-to-drink coffees. Okay. How many more branches in Korea with Maeil dairy farming? So we have in total 7 factories. Okay. Branch-wise, we have about 15 branches all over the country. But for the production and plants, we have 7 factories in Korea. I'm asking about turnover. Company's turnover. Oh, turnover. So how much do we make? Yeah. Okay. In revenue-wise, we make about $1.2 billion. With that in 2014. Okay. With the subsidiaries and affiliates, we do about $1.4 billion. In 2014. This year, we are expected to do about $1.3 billion with our own factories and plants. With our affiliates, it's about a little more, about $1.4 to $1.5 billion. What are the specialities of infant products? Specialties? Yeah, specialities. For infant? Infant, yeah. For powder? Oh, yeah. Powder. What are our specialists? So we do our baby milk. We do the infant formula, and then we do organic baby yogurts. Okay. And how do you see this visit about Punjab delegation, and are you planning to expand in other countries? We are it's a great pleasure to have delegates of state of Punjab. It was great to meet you all. We have plans to expand further, obviously. We do currently export to China and Saudi Arabia, but hopefully we'll be able to expand further into China, and also hopefully we can have factories in India and work further with Indian government. Especially in Punjab. Of course, Punjab. Thank you, yes. thank you so much. Thank you very much. ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ।